Yeah, hi all. Dipin, our guest, and Amol. How are you doing, Dipin? I'm doing good, Gajender. Yeah, Seems like आपके यहाँ बहुत ठंड है. Delhi is quite cold. yeah, right. I'm fortunate. I am at Bangalore, तो यहाँ पर इतना ठंड नहीं है. huh. Okay, so thank you for first joining this podcast and giving your precious time. Okay, Thank you. so yeah, Thanks for having me. Um, बोलिए, sorry. yeah. So we will start, and like we will start from your childhood. Like during your childhood, like when you get to know, like you have this issue, and what are the like, different difficulties you faced? Like we all have faced. ये बहुत interesting. It's very interesting. Okay, first, before I start, I wanted to understand whether I should go in English or Hindi English. Yeah, both, Hindi. both combined. Which language is okay? So I think you said Hindi and English both, right? Yes. Yeah, both. Okay, great. Um, so as you were asking about how was my ch ch childhood like, and when did I got to know about the stutter? So it's like any other stutter. I believe it was at very early age, maybe when I was 5 or 6. Um, I realized that I stutter. And the most funny funny part was the other people who so all the other people they would appreciate me stuttering. तो होता क्या है when people appreciate you then you are all okay. आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता उस टाइम. तो जो स्मॉल चाइल्डहुड के इश्यूज होते हैं वो लाइक एवरी अदर स्टटरर क्लास में रीडिंग वो हर किसी को इश्यू होता है. दूसरा व्हेन यू 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 हैव टू गो टू शॉप्स, तो वहां पे जाके अपनी बात बताना, क्योंकि Right. हमारा एक दिन स्टार्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है. Yeah. Right. तो इस तरह के इश्यूज हमेशा से थे. मुझे भी स्टार्टिंग में समझ में आ गया था, हाँ कुछ चैलेंज है. बट आई थिंक लाइफ उस समय तक इतनी स्टैमरिंग की वजह से इतनी इम्पैक्टेड नहीं थी अर्ली एज में. ओके, सो लाइक कोई स्कूल टाइम में इतना आप लोगों को इतना बुलिंग नहीं हुआ जितना जनरली मैंने फेस किया, मे भी बाकी लोगों ने फेस किया जो करते हैं लोग। बुलिंग, बहुत बुलिंग होता है. मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्कूल फ्रेंड्स सबसे बड़े ब, बुली बुली वो 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 ही लो लोग थे. बिकॉज मैं उनके सामने हकला गया या कुछ भी ऐसी बात हुई तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं. लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम जितने भी दोस्त थे वो सारे एक जैसे थे. तो एक दूसरे को खींचना सबकी आदत थी. तो उन्होंने मुझे किया बुली, मैंने उनको बुली किया. स्कोर वहीं सेटल हो गया. Okay, so like does it affect your schooling, like like due to stammering we always fear to go to stage during our school days. We are afraid to participate in anything. Yeah, I totally understand that. But मैं बताऊंगा आपको कि it was strange with me कि although I used to stutter, but along with it I used to do stage. Okay. I used to do stage a lot. तो स्टेज पे जा रहा हूँ, चाहे वहाँ हकला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ. तो स्टेज एक्टिविटीज मैंने बहुत की. और उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया आपको कि हकलाहट थी. आई यूज टू स्टटर, बट उससे मेरी लाइफ इम्पैक्ट नहीं हो रही थी, स्टॉप नहीं हो रही थी. तो इसलिए लाइफ फिर भी चल रही थी. दोस्त थे, फैमिली थी. एंड इन द स्कूल टाइम आई वॉज वेरी पॉपुलर एज अ नोटोरियस किड. तो उस तरह का पार्ट भी था. या ग्रेट, ये थोड़ा डिफरेंट है, जनरली सबके उसमें नहीं होता है ना। हम लोग मोस्टली डर सहमे से रहते हैं कहीं कोई कुछ पूछ ना ले, है ना।
Uh, okay, so thank you for sharing that. And after schooling, when you moved to college, so again, that was a different stage and most important stage in all of our life. So, like, how that went for you? College days. Um, correct. School, college, they are totally very two, two the different space. So in the school life, things were okay. Things were okay. But as in when you start growing up and you enter college, then along with age, you start get, 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 getting more and more conscious. So the moment I entered college, uh, I became more scared, more fearful of opening up about my stutter. So I started to hide it more, which increased my avoidances a lot. So as far as I remember, I did not attempt stage at college. I would not ask who questions in the class, or I did not have too many friends. तो वहां पर आप कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं एंड देन इट स्टार्ट इम्पैक्टिंग योर लाइफ अ लॉट. Yeah, thank you. And like during college days, is something happen which that time you felt like I have to do something for my speech. It happened that time, or like after that, after college time when you went to like companies that zone like corporate. Um, there were various events, but the challenge was back then. I did my schooling in the year 2002. So from 2002 to 2006. Back then, we did not have too many options. We did not have, or in fact, I was not aware of any sus, sus, support system or a platform like TISA. So I was all alone. I did not have anyone whom I can open up about my stutter, the issues which I was facing. Um, I failed to crack interviews, and when I had to appear for various mock exams at my college or va- va- vivas, then I would I would not. So I struggle to express at those opportunities. तो वहां पर मुझे इम्पैक्ट फील होना स्टार्ट हुआ. बट एज आई सेड, ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो आई कुड नॉट डू मच, Yeah, और right. एटलीस्ट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑप्शंस. Yeah, right. Yeah. So like after that, after college, like when you get your first job, so how was that experience with your stammer? बहुत मुश्किल था. मुझे नहीं लगा था कि आई विल बी एबल टू लैंड अ जॉब, बट थैंकफुली आई गॉट माय फर्स्ट जॉब. और एक बार आपको वो जो प्रेशर होता है कि आपको हाफ एन आवर में यू हैव टू प्रूव इन द इंटरव्यू, वो प्रेशर निकल गया. तो उसके बाद तो आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं, तो उस स्किल्स को लेकर के आप आराम से यू कैन प्रूव, यू कैन मेक योर ओन स्पेस. तो इन टर्म्स ऑफ जॉब और हाउ आई वॉज एबल टू प्रोग्रेस इन माई करियर, एक चीज थी विच ऑलवेज वर्क फॉर मी, विच वॉज स्टैमर तो था, बट आई यूज टू चैलेंज माई सेल्फ अ लॉट. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. Yeah. अब एक स्टैमरर के लिए इट्स वेरी हार्ड टू टीच, बट आई हैड an opportunity at my office wherein I worked as a corporate trainer. Okay. So Awesome. there I had to deal with the people from all walks of life. So it was a hard assignment for me.
But since I had this habit of pu- pushing my limits, it helped me a lot. Yeah, yeah, that's great because generally, like, it will not happen. Like, if we don't join any like TISA platform, and if we are new, so we always keep hiding. We always looking for a place to hide. Yeah. Correct. So thank you for sharing that. And like during your working days when you are new, like is something happen like worst thing, so that really like make you like I have to work very seriously on my communication. Is that anything happen like that during your working when you are very new? When I was very new, did anything happen which made me or which would have hit me hard? Yeah. I'm trying to recall. देखो बहुत सारे इवेंट्स होते थे जहाँ पर यू यूज टू स्टटर अ लॉट या फिर यू वुड हाइड यू वुड एस्केप तो आई वुड से आई एम ट्राइंग टू रिकॉल मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो थे स्टार्टिंग में आई थिंक दोज इम्पैक्टेड मी अ लॉट बट स्टिल सिंस आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑप्शन सो आई कुड नॉट डू much about it much about it um, I would say that up until 30 30 years of my age, I could not do anything much substantial about my stutter. Huh. At the age of to 26, I did approach AIMS once, and I had a fr- friend from school, and she used to work at one g- g- government hospital so I also approached her to seek help कि भाई स्टैमरिंग के लिए कुछ हो सकता है क्या एंड वेदर यू हैव एनी लिंक्स आउट देयर तो इस तरीके से छोटे मोटे इंसिडेंट्स थे जहाँ पर आई थॉट टू डू समथिंग अबाउट द स्टार्टर लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ से अचीव हुआ नहीं एंड बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एबल टू Yeah, I think there is some connection issue, like we not able to hear last part. ओके सो आई डोंट नो अप until where you you were able to hear me. I was saying, although there were small incidents in my life wherein was impacted by the stutter, but I could not do anything substantial until then because I was able to hide, avoid, play around because Yeah. I was a covert stutterer. मैं अपनी stammering को um, छुपा करके I was able to play around. Yeah. अप अंटिल 35 ईयर्स 30 ईयर्स ऑफ माई एज स्टैमरिंग के बारे में कुछ खास किया नहीं लेकिन हाँ उसके बाद मुझे ये समझ में आने लगा कि स्टैमरिंग की वजह से मेरे अवॉइडेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उससे मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्पैक्ट हो रही है लाइफ में एक अबव एवरेज मेरी लाइफ है फ्रेंड्स है फैमिली है जॉब है everything was there but still I was unhappy. Yeah. Yeah, so like we all know, like telling about our stammering or disclosing is the most difficult part. We try all our ways. No one should know at any cost. So when did you first like disclosed or do stammering, like to workplace or any people like outside of your family? So it's very difficult. Saying is easy, I know. We all can say, but doing it's like most difficult part. दुनिया को पता होता है कि आप हकला रहे हो
आपको पता होता है कि दुनिया को पता है, बट स्टिल ये आपके अंदर कभी ये गट्स नहीं होते कि आप दुनिया के फेस पे बोल पाओ कि भाई मैं हकला रहा हूँ, मुझे इससे परेशानी हो रही है। तो खुद से लोगों को बता पाना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने तो बहुत लंबे टाइम तक हाइडिंग के थ्रू ही अपनी लाइफ जी है। इट वॉज ओनली आफ्टर आई जॉइन टीसा आई अंडरस्टूड कि इट्स ओके टू स्टटर, इट्स ओके टू स्टटर। और उसी के बाद जाके मुझे ये सारे टूल्स मिले, जैसा कि अभी आपने बोला, डिस्क्लोजर। ये सारे टूल्स मुझे टीसा में आने के बाद ही मिले हैं, और उसी के बाद मैंने आने के बाद, पहली बार टीसा में आने के बाद ही मैंने अपनी फैमिली को सामने से बताया कि भाई पापा मम्मी मैं अगलाता हूँ। हाँ, उनको पता है कुछ एग्जैक्टली, तो। लोगों को पता है, हाँ, राइट। दुनिया को पता है, बट खुद से बता पाना, हाँ मुझे पता है कि तो तुमको पता है। बहुत डिफिकल्ट। करेक्ट। या सो या जैसे हमारी भी सेम कहानी है, हम लोगों की भी, हमको भी पता है लाइक, वो सामने वाले को पता है, बट स्टिल वी ऑल लाइक ऑलवेज, कुछ भी हो जाए, बस मालूम नहीं चलना चाहिए, माई थिंकिंग यही रहती है मोस्टली। करेक्ट। लाइक वी ऑलवेज ट्राई टू शो लाइक, ना लाइक आवर इमेज, वी केयर अबाउट आवर इमेज, इट शुड नॉट गो डाउन, इवन अदर पर्सन नोस। सो बचपन के छोटे हाँ, छोटे, बोलिए। सॉरी, बोलिए प्लीज। नो 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 प्रॉब्लम, बोलिए, मैं आपसे पूछना चाहता था। मैं यही बोल रहा हूँ कि छोटेपन से बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पर मुझे मुझे अभी एक्सपीरियंसेस इतने यह याद न न नहीं है, नहीं है। लेकिन हाँ, इतना समझ में आ जाता है आपको कि छोटपन से ही कि हकलाना अच्छी बात नहीं है। तो आप बहुत कोशिश करते हो, हर तरह से कोशिश यही करते हो कि हाँ दूसरों को नहीं पता लगना चाहिए दैट आई स्टटर। और हकलाना मेरी इमेज के साथ में एसोसिएटेड है, अगर मैं या हकलाया तो मेरी इमेज छोटी हो जाएगी, पीपल विल मेक मी फील लो। या और ये भी ना लाइक, पीपल कैन टॉक अबाउट एनी डिफरेंट डिजीज, दैट दे कैन टॉक and they don't feel like shame anything, but when it come to stammering, they see from a different, okay, different eyes when you करेक्ट। do that. करेक्ट। बिकॉज Yeah, ना लोगों को, ना हमको, किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में क्या 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 पॉसिबल टूल्स हैं। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है, बताया गया है कि हकला रहे हो, इट्स योर मम मम मिस्टेक। आप धीरे बोलोगे तो शायद नहीं हकलाओगे, आप ऐसा करोगे तो नहीं हकलाओगे, आप एंक्शस हो रहे हो इसलिए हकला रहे हो। तो 50 रीजन हमें दिए जाते हैं, तो हम मान जाते हैं कि इट्स ऑल आवर फॉल्ट दैट वी आर स्टटरिंग। okay. So like, in what year you joined TISA, and like how you get to know like TISA is there, like through Google or someone told you? हम्म। तो एज आई टोल्ड यू, up until 30 years of age, I did not really feel the need to do anything, or maybe I did not have options. But after that, I become a lot aware in the sense कि I thought that every day I am waking up with the same thought that I'll talk to people, I will be stuttering. So whether I should go here, whether I should avoid um, meeting so and so people, and you would also uh, re- re- restrict your zone that I'll be able to do X things, and there are few things which I should not do. तो उन सब के बीच में मेरी लाइफ भी बहुत ज्यादा गोल गोल घूम रही थी। So, what I did, I came to uh, Bangalore, and I came here for two reasons. One was job, and the other reason was there was a speech therapist. And first time in my life, I thought that कि life में एक ये बहुत important चीज़ है. Now I should go about it. Now it's high time I should do something about it. हालांकि वो स्पीच थेरेपी जो थी वो
उनके वेज और जो मुझे च, च, चाहिए था, इट डिड नॉट वर्क वेल। बट हाँ, उसके बाद आई केम टू नो अबाउट टीसा। हाउ आई केम टू नो अबाउट टीसा? देर वॉज एन इंटरव्यू ऑफ Uh-huh. हाय मितेश। 1 minute. Amitesh, can you mute? We will take your question later on. Oh, yeah, go ahead. तो मैं बता रहा था आपको कि आई गॉट टू नो दैट ऋतिक रोशन, ही इज ऑल्सो अ स्टैमरर। तो आई स्टार्टेड स्टॉकिंग हिम ऑन इंटरनेट, but there was no way I could reach out to him. But one fine day, I came across an article wherein identified that there is an organization called TISA, and Ritik Roshan, he gave an interview to the organization, where he also shared about how can, or maybe he would have shared about uh, tips for stammerers. So that that was the first incident when I got to know about TISA, and after that I um, started to call. I went on TISA internet page, and from there I started to call all the coordinators. I called up Harish, Dhruv, and all the other people whose phone number was on the website. तो ऐसे मेरा फर्स्ट मेरा इंटरेक्शन हुआ टीसा के साथ। Okay. Okay, so like after joining TISA, like what difference you feel? Like what contribution TISA have made, or like changes that was not there before? सबसे बड़ा चेंज आपके सामने अभी है कि आई नो कि ये मीटिंग का इट विल बी स्टोर्ड इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। स्टिल आई एम ओपनली स्टटरिंग। आज से 5-6 साल पहले अगर ये होता, तो मैं कभी इंटरनेट पे नहीं आकर के मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं आके ये बोल रहा होता कि आई स्टटर, और मैं ओपनली आपके सामने हकला रहा होता। तो ये सब टीसा की वजह से ही है, जहाँ पर अब मुझे ये समझ में आ गया है कि वन, क्या पॉसिबल है, क्या आसानी से अचीव हो सकता है। जैसे कि हम सब जो भी स्टैमरर्स हैं, आई थिंक फॉर एवरीवन द बिगेस्ट परसूट इज फ्लुएंसी। Yeah. तो आफ्टर joining TISA, I have understood that fluency may not be easy to achieve, but there is uh, there is a much easier goal which we all can achieve, and it is how to articulate. So it was about how can we communicate along with the stutter. टीसा में आने से पहले तो मुझे ये लगता था कि कम्युनिकेशन इज ओनली अबाउट फ्लुएंसी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि यू कैन stutter and still communicate your thoughts with confidence। तो इन ऑल अगर मैं आपको बताऊं, तो टीसा में आने के बाद माय क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। Oh, great. ऐसा नहीं होता कि अब मैं नहीं हकलाता हूँ, अभी भी हकलाता हूँ, लेकिन हाँ, अब मेरी हकलाने में पहले जितना स्ट्रगल उतना नहीं है, जितनी एंजाइटी पहले होती थी उतनी नहीं है। तीसरा, नाउ आई कैन एडवोकेट। अगर अभी कोई, इनफैक्ट इवन इफ माय, इवन इफ एट माय ऑफिस, इफ इवन इफ माय मम
manager would ask me, then I can easily confront him and tell about ये stuttering क्यों हो रहा है. It is not just that कि I am not confident or anxious or nervous. तो I can easily advocate for me. तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस टीसा में आने के बाद मेरे अंदर आए हैं. Okay, thank you. And like one next question, like like we all always face difficult situations here and there in office, outside, shop. So like what thing you do or how you handle those situations? Because we all have different things. We all know TISA have so many techniques, this that. So for you, like how you handle that and what have benefited you? Hmm. Difficult situations and how do I handle them and what has helped me so far. Yeah, So I would not name, but there is one person और उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है in terms of stammering. उनके उनकी वजह से मुझे इतना उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो मुझे मतलब स्टैमरिंग हो रही है, सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कभी ये समझ में नहीं आता था कि हाउ डू आई अप्रोच कि जैसे आपने मुझे पूछा कि हाउ हाउ शुड आई अप्रोच अ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो उनके साथ में आने के बाद मुझे वो चीज़ पता लगी कि अप्रोच होना क्या चाहिए. आई विल टेक एक स्मॉल एग्जाम्पल. sure, जैसे अम, पहली चीज तो उन्होंने मुझे यही सिखाई कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज कि यार मुझे इन सारे एरियाज में इशू हो रहा है. से फॉर एग्जांपल मुझे अपना नाम बोलने में इशू हो रहा है, मुझे अपना नाम बोलने में मैं हकला रहा हूँ. आपके साथ नाम बोलने में हकलाहट थोड़ी हो रही है, दोस्तों के साथ हकलाहट थोड़ी और कम हो रही है, या फिर ऑफिस जाता हूँ तो वो हकलाहट और ज़्यादा हो रही है. तो कहने का मतलब ये है कि काम सेम ही है, लेकिन अलग अलग लोगों के साथ और अलग अलग सिचुएशंस में मेरा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है. तो पहली चीज है, वी हैव टू आइडेंटिफाई अवर कंफर्ट जोन्स एंड नॉट सो कंफर्ट जोन्स. पहली चीज, जब वो आइडेंटिफाई कर लिया आपने, उसके बाद दूसरी चीज है कि अब हमको बहुत सारे टूल्स पता है. हम लोगों को पता है कि भाई प्रोलोंगेशन है, बाउंसिंग है, वो वॉलेंटरी स्टटरिंग है. बहुत सारे टूल्स हमको पता है, लेकिन वो टूल्स हमें यूज़ कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, वो हमको नहीं पता. हमको वो समझ में नहीं आता. हम वो टूल्स लेकर के हम लोग हर जगह पर कूद जाते हैं और प्रैक्टिस तो कुछ की नहीं होती है. तो मेजर जो मुझे बात समझ में आई कि जितने भी टूल्स आपको पता है, यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर टूल्स फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड देन स्लोली टेक दोज टूल्स अलोंग विद यू इन योर नॉट सो कंफर्ट जोन्स. तो इस तरह की प्रैक्टिसेस करने से आपको धीरे धीरे हेल्प मिलती है. okay, thank you. Okay, so we also have like so many people joined. So if you people have any question, you can feel free to ask. You can raise your hand and ask. Okay. हेलो गाइस, अगर आप लोग भी आना चाहो तो आप लोग भी अपना वीडियो ये ऑन कर सकते हो, सो यस दैट मैं सर। आप लोग को देख पाऊँ. Yeah, you can ask. मेरा नाम सुनील है, मैं उत्तराखंड से हूँ। हेलो सुनील. तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने बहुत कंट्रोल किया है स्टैमरिंग में। मतलब कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हम बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं, जैसे कलीग्स के सामने, सीनियर्स के सामने। तो मतलब उस टाइम पर कैसे हैंडल करना चाहिए अपने को, क्योंकि उस टाइम बहुत नर्वस हो जाते हैं। 20 लोग हमको देख रहा होता है, हमारे बात का वेट कर रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है करके। तो उस ऑकवर्ड को मतलब कैसे दूर करना, मतलब कैसे ओवरकम उस टाइम।
सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है आपने। तो आपका सवाल है, अगर कभी आप ऑफिस में 10 आपके ऑफिस के कलीग्स हैं और उनके सामने आप हकला जाए, तो कैसे आप वहां से वापस क कम बैक करें, हाँ राइट? जी। देखिए, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पर आपको। से फॉर एग्जांपल, आप रोड पर हैं, कार लेकर के, आप उत्तराखंड में घूम घूम रहे हैं, ठीक है? पहाड़ हम्म। पे जा रहे हैं, अपहिल जा रहे हैं पहाड़ पर, गाड़ी बीच में बंद पड़ गई, क्या करेंगे आप? हम्म, धक्का मारेंगे उसको। धक्का मारेंगे, बंद पड़ गई क्या करेंगे? गाली देने हाँ। से तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आप हम्म। पे थोड़ा धक्का मारेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, फिर चल देंगे। हम्म। यही काम यहाँ भी करना है। दोस्तों के सामने हकला गए, एक बार थोड़ा सा हंसे उनके ऊपर, अपने ऊपर, फिर गाड़ी दोबारा से स्टार्ट की और चल दिए। हम्म। बाकी हाँ मेरे मतलब उस टाइम पर ऐसा होता है कि यार, अब सामने बंदा बैठा है, मतलब 10 बंदे बैठे हैं, अब वो वेट कर रहे हैं यार ये क्या बोलना चाह रहा है। अब हम्म। वो भी मतलब हमको वो भी सोच रहा है कि यार ये बेचारा अब बोल ही नहीं पा रहा है। अब हम भी हाँ, सोच रहे हैं यार मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। उस टाइम बस लगता है यार बोल फटाफट यार भाई क्या बोलना चाह रहा है। इन्हें देखो, बोलो उनसे कि भाई जल्दी से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, मेरी गाड़ी अटक अटक के चलती है। थोड़ा ह्यूमर आपको हेल्प करेगा। हाँ वो तो सही बोला सिचुएशन, आपने। हाँ, आपकी जो आपने मुझे चीज बताई है, देखो, पहला तो उसके अंदर अप्रोच ये होता है कि अगर आपकी ग्रेजुअल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसा मैंने बताया कि जिन जोन्स में आपको लगता है कि आप आराम से बोल पाते हो, या फिर जहाँ पर आप हकला गए तो भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वहाँ पर आपकी स्पीच की जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी टूल्स हैं, वहाँ आप उनके साथ खेलो, हाँ है ना? मतलब क्या होता है ना, जैसे मतलब मैं तो अपना मतलब मेरा ये ऐसा है, मतलब फियर जैसा है कि यार ये सामने वाला बंदा क्या सोच रहा होगा। स्ट्रेंजर के सामने बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं होता है। अगर कोई मतलब अलग अपना बंदा है कि यार कहीं मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेगा अगर मैं अटक गया, तो ये मतलब ये फेयर निकलता ही नहीं है। मैं कितने टाइम से कोशिश करता हूँ कि यार ये निकल जाए फेयर, कि सामने वाला बंदा मेरे को देख के मतलब उसके मन में मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं अटक गया तो वो इस चक्कर में फिर अटक ही जाता हूँ गंदा ही फिर। दोस्त, सिंपल सा चीज़ है वहाँ पर। जो जो चीज़ आपके अंदर है, जो डर आपके मन के अंदर है, या फिर जो थॉट्स आपके अंदर है, सामने वाला वही थॉट्स के हिसाब से चीज़ें बोलता है। अगर आप उसके सामने हकला रहे हो और स्माइल कर रहे हो, तो वो बंदा भी धीरे से आराम से नॉर्मल हो जाएगा, वो भी कुछ नहीं सोचेगा। लेकिन आप भी अगर अपने थॉट्स में डूबे हुए हो कि क्या सोचेगा, क्या हो गया, तो वो बंदा भी आपके सामने वैसे ही सोचने वाला है। तो हम्म। इन शॉर्ट, सामने वाला जो भी है, ही इज गोइंग टू फील द सेम वे एज यू आर थिंकिंग। जैसा आप सोच रहे होंगे वैसा वो सोचेगा। अगर आप अपने बारे में ठीक सोच रहे होंगे, तो वो भी आपके साथ आपके बारे में ठीक ही सोच रहा होगा। हम्म, ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू। Okay. Anyone else can ask question. We have time around. We have more than 30 minutes. If you don't have question, like people, I can ask one question. So like Dipin, like if someone are there are some people okay, they are very new to TISA. So what do you advise? Like what they can do for the first 6 months after joining the TISA? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन। तो टीसा में आने के बाद एक बहुत अच्छी स्पेस, बहुत अच्छा सेफ स्पेस आपके पास होता है, विच इज SHG। आई वुड हाईली हाईली recommend people to go and join SHGs, attend SHGs as much as they can. One, two, if you have any opportunity to attend communication workshop, NC, or any such event held by TISA, please, please, please go. Three, you should start attempting MOOC, or I think if there is a
course also, which is called TOPG. If the TOPG is also happening, please go and attend that. It it will it will help you to go through the right resources. क्योंकि देखो पहले आने के बाद इंसान को पता नहीं होता कि स्टैमरिंग क्या है, क्यों हो रहा है, और मेरे अंदर बहुत Yeah. सारे थॉट्स जो हैं, आपको मन करता है कि आप दूसरे लोगों को बताओ। तो टीसा में आने के बाद आपके पास प्लेटफॉर्म है एसएचजी का, जहाँ पर यू कैन ओपन अप, और आपको आने आने के बाद आपको वो एक हीलिंग जैसा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। Okay. Yeah. Thank you for that. Those are very valid point. And like people who are new, they can focus on that. Like whatever chance they can get, like workshop or a self-help group, they can join, and that will definitely help. So right now I am in Noida, and whenever I get time, I go to Delhi self-help group, and we also have in Noida. There like Vishal, he will lead. Vishal Gupta, he is a coordinator, so he will lead our Noida group. या आई मेट विशाल, वंडरफुल पर्सन। Yeah. राहुल आई थिंक कुछ पूछना चाहते हैं। Ha, sure. Yes, yes. हेलो राहुल। Hi. Uh, am I audible? यू आर Yes. परफेक्टली ऑडिबल, प्लीज गो ऑन। Hi, brother. Hi, Gajender. Hi. Uh, I think last time I met Dipin, we were in the TISA national conference back in 2022, I think. Uh, 2022। we had yeah. You were also there in the Delhi national conference, I guess, right? यस यस, Yeah. So it was nice meeting you there and here also, Dipin. सेम है। Uh, yeah. Just one question from my side. Since you are working in Amazon, and so you guys must have some team presentations, giving demos and whatnot, right? So how do you manage those kind of speaking situations where you had to present something in front of your team or in front of your manager, and how do you prepare for it? दैट्स अ वेरी गुड गुड question. So Rahul, if I have to give or handle any such situation, the first thing I would do is just a minute. Meet my son. Hey, Okay. Hi. hey, champ. Hey. Hello. This Hello. is younger son, my younger son. Okay. He just came into Cute. my room. I Yeah. will let him go, then I'll answer you. Yeah. Sure. You just give me a minute. Yeah. Yes. No, hello. आरव, बेटा कनक को लेके जाना है एक बार। Okay, I'm so sorry. Okay. Yeah. No. So the first thing which I'll do is, and the first part of my preparation, it will be to prepare a good disclosure statement, because I know पूरी मीटिंग में एक ही चीज घूमती र, 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 रहेगी कि whether I should say that word or not. What if I stuttered on that word? What if I get blocked on that word? So in order to clear the air and to have my complete focus on the content, I would start with a disclosure. I would say something like this. Hello everyone. My name is Dipin Jain, and as you can already see that I am a person who stutter. So I would highly appreciate if you can be patient, and if in case you don't understand me, please feel free to stop me and ask again. This way, I would like to clear the air, and then the entire focus would shift on the content. Thankfully, in corporate world, people are much more understanding. They are a lot accommodating. So Yeah. the way you start. Yeah. Makes sense. Makes sense. Yeah. Like in my case, I also use that kind of disclosure.
Mostly I use it when I have some kind of butterflies in my stomach. Just before the meeting, if there is some butterflies or if there is some anxiety, I usually share it up front. Else I will I will just go with the flow. But That's yeah, good of you. yeah. And Toastmasters, things like Toastmasters also have significantly helped in speaking in public and those kind of things. So, but yeah, makes sense, makes sense. They do. Okay, Dipin, thank Toastmasters, you. it really helps. Yeah, Thank you for asking, Rahul. Yeah, Rahul, actually, that was a very good question. Like, we all faced on daily basis. We have to give presentations. Like, we have yeah. same feelings, same like what you asked. Anyone like you people have questions like Akash, Vijay, Mitesh, Amol. You can ask. Chit chat also. Ask Yeah, if you want, you can turn your videos on and we can chit chat. it's, How is your weekend going? अमोल कैसे जा रहा है आपका वीकेंड? Hey, hi, yeah, it is good, good. Amol from Pune, is it? Amol Oh, Karale from Pune. yes, Nice, man. yeah. Nice, nice. So Amol, if Yeah, I could me and ask, Amol is in what do the you same do? city right now. Sorry? uh, I was saying me and Amol are living in the same city, but we rarely get a chance to meet each other since he is living on the Pune East and I'm living on the Pune West. So I think one time we met, but I think last few months have been kind of up and down. We are not able to maintain that discipline to meet. But yeah, someday we will do that definitely. I think you were based out of Haridwar, Yeah, Rahul. bro. Yeah, yeah. Few months back, I relocated to Pune. I mean, Ah. Haridwar was getting too comfortable for me, and uh, as you know, I mean, living inside the comfort zone is the dangerous thing that you can ever do, right? We should always come outside the comfort zone. So Ra- that was the reason I moved away. So right now I'm in Pune, और bro. yeah, और What राहुल yeah, returned to Mitesh. office? Yeah, Mitesh, you can ask. नहीं नहीं, मैं ये सब बोल रहा था कि राहुल राहुल क्रिप्टो बिलियनर है, उसके पास क्रिप्टो बहुत पड़े हैं। Yeah, I remember. Hi, Mitesh. कैसे हो? I know Mitesh, man. I mean, me या and Mitesh met in 2013, bro, right? 2013, यस 12. यस, I know हैदराबाद this guy हैदराबाद from वर्क्स, back then. हैदराबाद वर्कशॉप थी ना, शायद हैदराबाद में मिले थे हम। Hyderabad, huh? या So 2000, I think 14, यस 14, me, Nitesh, या yeah, we were in Hyderabad. Great times, man. यस 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 And I miss just for those. like, Hmm. the crypto market is down, so my entire portfolio is 90% down. Don't worry. क्रिप्टो तो एक लाख एक Yes, लाख please, एक जैसे थे। लाख एक लाख पहुंच गया, क्रिप्टो तो कहाँ से डाउन है? अभी अभी लास्ट में 2-3 हफ्ते में डाउन जा रहा है यार. जी जी Yeah, but good to see you, Nitesh. Nice या to see गुड you, टू man. सी यू। या आप कुछ पूछ रहे थे शायद नितेश. Go ahead, sorry. हाँ, नहीं नहीं, मैं पूछ नहीं रहा था, मैं ऐसे ही बस fine. नितेश बता रहे थे, जनरल राहुल बता रहा था क्या मैं। बता रहे थे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो राहुल इज द मैन। यस यस यस। I mean, the expert whose portfolio is 90% down, and still, if you would like to ask me anything, go ahead. कोई यस नहीं, यस। अप्स एंड डाउन्स तो मार्केट में चलते रहते हैं। Yeah, right, right. सो Okay, मितेश, आप so हैदराबाद में, आर यू फ्रॉम हैदराबाद? कौन? मैं नहीं, मैं गुजरात से हूँ, दिपिन। गुजरात में का 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 कहाँ से? गुजरात में मैं पाटन डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो कि अहमदाबाद से वन वन 180 किलोमीटर दूर होता है, तो मैं मैं वहां से अहमदाबाद हूँ। में 4 साल रहा हूँ। अच्छा, अहमदाबाद में 4 साल रहे हो? हाँ, मैं उस टाइम एचसीएल में था, जॉब करता था एचसीएल में, तो उस टाइम ओके पे आई आई वाज इन अहमदाबाद फॉर अराउंड 4 इयर्स। इनफैक्ट मेरे दीदी ओके है, ही स्टिल इन शी इज स्टिल इन हैदराबाद, सो ओके। शी इज तो अहमदाबाद में आप कौन से ईयर में थे? 2006 टू 2010। ओके, और कौन से एरिया में थे? मैं था
आनंद नगर एरिया में, सैटेलाइट एरिया, वेजलपुर, या सैटेलाइट एरिया। ओके। तो वहां पे रहता था मैं। सैटेलाइट में बहुत रिलेटिव रहते हैं हमारे। अच्छा। गुड। जी 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 जी। गुड। और भी बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पर, आकाश, या नरेश। Hey Dipin, I have one question. Yeah, you है can अभी। ask. You can ask. Yeah, like other than our regular like stammering techniques, what else you do? Like yoga, exercise, or anything else? As like I can see a few yoga mat are lying behind you. Yeah. Correct. So हाँ, मुझे I like to do यो yoga. I have been a yoga practitioner for a long time. Something. Give me some time. 20 minutes. I'm not too much hungry. Let's see. अभी तुम खा लो. Sorry. Oh, okay. Yeah. Me and my wife, we both practice yoga. But apart from this, I would like to explore any other thing which can keep me fit. So I do go to cult where I do strength training. Okay. That's it. Okay, Dipin. Yeah. Thank you, Anmol. I've heard Anmol. about cult a lot lately. I mean, they do some body weight training, something, right? No dumbbells, no weights, only body weight trainings in Not the like cult. that. They have everything. There are Hmm. weights, but like unlike traditional gyms, you may not find all the heavy machines out there. But yeah, barbell rods, dumbbells, weights will be there. Yeah, yeah. I also started training, man. Last 2 months, my weight was close to 118, 119. I was like big as hell, man. So, seriously. And my cholesterol was going high. So only few months back, when I moved to Pune, I started training. I want And to yeah, ask you guys, how do you increase your weight? My weight is very much stable. Whatever I do, it does not increase at all. हम्म। bro, bro, you're gifted with good genes, man. Your genes are good. With Not, high, not gifted at yeah, all. man. I mean, my body has low metabolism. So because of that, if I eat less, it will कहते हैं ना body में लगता ज्यादा है खाना. So that's अब the वो thing, बोलते हैं हमारे यहाँ बहुत सारा कि इसको हवा भी लग रही है, इसको पानी भी लग रहा है। हम ऐसे लोगों को right? पता नहीं है। चलो guys, You are lucky, man. I'm sorry. I'm sorry to stop you. We have other people. I want to speak to Akash. Hi Akash. I have not heard you during the meeting. Meeting में आए हो, अपनी आवाज तो सुनाओ. Hello, yes, Hi sir. Akash. Dipin. Good evening, sir. Dipin. Yeah. Dipin. Yes, yes. कैसे हो आकाश, Good आप कहाँ evening. से हो? Yeah, अच्छा हूँ। दिल्ली से हूँ मैं एक्चुअली। दिल्ली से हो? केजरीवाल जी को हरवा दिया आपने? हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। केजरीवाल जी ने सुन लिया तो फिर क्या करेंगे वो? आकाश ने हरवा दिया मेरे को। पोल्यूशन वगैरह जो ना ज्यादा थी, तो जनता जो ना प्लस थी जो ना, इसलिए थोड़ा पानी वानी और पोल्यूशन और पॉल्यूशन एडवर्टाइजमेंट में जो बीजेपी ना, नहीं हटाएगी। हाँ जी। एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा ध्यान था, मतलब पैसे वगैरह खर्च करने का सोचना है। ग्राउंड पे कम चल रही थी और जो ना एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा थी, तो आप हम्म। लोगों को ये लगता होगा बात से कि मतलब बहुत काम वगैरह हो रहा है, पर यहाँ पे जो ना जनता त्रस्त थी, तो उसमें जो ना इसलिए ऐसा वर्डिक्ट है। हम्म। सही बात है। अब देखते हैं बीजेपी के आने से कितना चेंज आता है वहां पर। थैंक यू आकाश। Okay, we have Sushil. Sushil, do you want to ask any question? You can ask. We also have Vijay. No, sir, no, I don't have any question right now. Okay, fine, no problem.
सुशील आप, आई एम सॉरी, सुशील आप क क का कहाँ से हो? सर मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं गोरखपुर रहता हूँ। मेरा एक अच्छा सा नाम है दिपिन। वो अलग बात है मैं ढंग से नहीं बोल पाता, लेकिन आप तो बोल पाओगे। ये सर दीपिन, बिल्कुल सर। दिपिन, गुड। तो अभी लगता है आपके यहाँ ठंड नहीं पड़ रही इतनी, आप केवल शर्ट में बैठे हो। हाँ सर, अभी मौसम थोड़ा सही है और काफ़ी ठीक है मौसम पहले से तो। गजेंद्र कह रहे हैं अ, ठंड बढ़ रही है उनके यहाँ कितनी ज्यादा। गजेंद्र जैकेट पहन के बैठे हैं, आप कह रहे हैं मौसम सही हो गया है। हमारे यहाँ थोड़ा कम कम ठंड है। गुड गुड। थैंक यू सुशील। तो सुशील, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ सर, स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी है और फिलहाल मैं तैयारी करता हूँ एग्जाम्स की ऑनलाइन। अरे वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू सुशील। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सर। अच्छी बात ओके। मुझे फील की ये लगी कि उसने या वीडियो ऑन किया, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, है ना? राइट। और करेक्ट। हर जनरली कोई ना अपना हम चेहरा लोग, दिखा दो यार, हाँ इफ जनरली पॉसिबल। हम लोग छिपे रहते हैं ना एक उसके पीछे, वही हाँ, देखने वाला चेहरा। तो लाइक सुशील पूजा इफ पूजा करके पॉसिबल आए हर हैं कोई क्या? अपना वीडियो ऑन कर लो एक बार प्लीज यार, मतलब हाँ, इफ गजेंद्र एक फोटो पॉसिबल खींच यार। लेंगे अच्छी सब लोगों की। ऑन ही नहीं हो रहा है यार, मैंने ट्राई किया, ऑन नहीं हो रहा है वीडियो। विजय भी हमारे साथ है। विजय, आपने डीपी बहुत अच्छी लगाई है। वो डॉक्टर है एक्चुअली। ओ, Hello, हेलो hello, good विजय। evening. हाय, गुड इवनिंग विजय। हाय Uh, विजय जी। right now I am driving actually. तो ओ। मैं बहुत देर से आपका सुन रहा हूँ, सुनने का काम तो मैं एकदम कंसंट्रेशन से कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं रुक गया। आपने 2-3 बार मेरा नाम लिया, इसके लिए रुक गया। आई एम सॉरी, मुझे So लगा ये नहीं था कि मैं आपको रोक दूं रास्ते में। first of all, let me introduce myself, Dr. Vijay Avare. I am working as professor at Dr. Balasaheb Sawant Kokon Krishi Vidyapit. This one is Agriculture University. So I am engaged in teaching extension to BTech, MTech, and PhD students. ओह वाह। Uh, so I have joined this uh, group TISA with I think Gajendra. So Gajendra is my colleague, या या आई नो, लाइक and he's इन a TO good. PG you are there, right? Yeah, POPG we did together. और हम लोगों ने बहुत अच्छे से वो किया है। अभी ज्यादा तो बात नहीं करूंगा, एक बात पूछनी है आपसे दीपेन से। जी एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि व्हाट एडवाइस और व्हाट वे यू विल सजेस्ट दैट हाउ we can give the declaration or the student can give the declaration while in I mean while facing interview। तो इंटरव्यू के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करना चाहिए या बीच में जब भी टाइम मिलता है तभी कर देना चाहिए? मतलब लाइक एंजाइटी काइंड ऑफ थिंग स्टार्टिंग में करेंगे तो मुझे थोड़ा लगता है कि so that may create some sort of like negativity at starting only। तो कैसे उसको, मतलब उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सर, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। हाँ, मैं यही बोलता हूँ, जैसे कि अमूमन डॉक्टर्स बताते हैं, तो हाँ, डॉक्टर लोग यही बताते हैं कि जैसा आपकी बॉडी और माइंड को फील हो, यू शुड गो अलोंग विद इट। तो ग्रेट ग्रेट। केस में भी यही या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरे हकलाने से यहाँ पर मेरा इंटरव्यू इम्पैक्ट हो जाएगा, है ना? राइट। तो हाँ, मेरा पर्सनल वो तरीका यही है कि मैं स्टार्टिंग में ही बोल करके फिर शांत हो जाता हूँ। स्टार्टिंग में मैं Uh, उनको बता देता हूँ कि भाई so मैं I could हकलाने। not, so while driving, I could not hear your brilliant sentence. So some sentence you spoke that when there is meeting or something going on, na, so you declare something. So that sentence I could not hear while driving. Please repeat that. सो So I'm how at the you are? interview or at the meeting, then I would Uh, start with a disclosure statement. I would how? start by saying that my name is Dipin. I am a person who stutters, and I would appreciate if you can be patient with me. If you don't understand me, please feel free to stop me and ask again. In that Great, great, case, great, great. what I do is I confidently stutter in front of the people. I also
clear the expectations that I may take a little longer to speak. Please do not consider it as as a sign of my low confidence, but Great, I great. am a born stutterer. And then I also tell them about what those people have to do. They have to be patient, and if they don't understand me, I ask them to stop me and ask again. This way, I have cleared all the air so that they don't assume anything. And I also share that if in case I'm stuttering, I want you to be patient, and I also want those people to ask me again if they are unable to understand me. Period. That's a great one. The same statement or same kind of advocacy. I think Dr. Amit Bajaj has said. Correct. Right, right. It's good. And nice to meet you. So I will be listening you, but I Same here, can't sir. keep my camera on. But I'm listening, है ना? Okay, So no Thank I'm you, sir. problem. playing the Thank role you of for active listener. keeping the camera on, And for turning the camera on. Thank and you the for talking to me. conversation is great. Great conversation is going on. Thank you. Thank you. Congratulations to Gajendra and also the host. Thank you very much. Thank you. Okay, Okay. I'm Thank you. listening you. Huh? Okay. Sure, Sure. sure. Thank you, sir. Yeah, Dipin, one last question. Okay, like we have 4 minutes, so one last question, and it is very important. Like I think a lot of people have asked you, and when I came to national conference, I also have asked you. Like this is regarding, okay, like when someone trying for the next level, like promotion, like a lot of people say skill. If you have skill, it does not matter whether it's time or not. But like practically, like what we most of people see, even if we have skill, it's okay. Skill should be there, but apart from that, communication part is very important. Apart from this one, your skills, because if you don't have like people, they don't want to give promotion, because they feel you will not be able to manage the team, because you are not a good communicator. How can you manage the team? So what are your like view on that? Communication is a very, very important skill to have these days. Um, and thanks to TISA again, जहाँ पर um, you all can learn on how can you still communicate effectively along with the stutter. So right now I'm stuttering, but I believe all the people are able to understand me. And there are various places, various forums wherein you can learn to communicate effectively with the stutter. I've seen and I know, in fact, even me, I used to believe that people who stutter, they cannot be good communicators. But TISA has proved me wrong. So I want to stress upon um, the importance of communication skills. So all the people who stutter, you do not have to be fluent, but you should learn to articulate your thoughts with stutter. Thank you, Gajendra. Yeah, thank you so much. And yeah, and it is very important, like our thoughts should be very clear. That is a very good point. Whether we stutter or not, that's like secondary. Like whatever we're trying to say, we should be able to like send our message to the other person. Correct. Yeah. Okay, so thank you so much for giving your time and joining us. And it was a great session with you. And thank you all for your time. Thank you, Vijay, for hosting and for having us. I would look forward to speaking to you and all the other people here um, in future. Thank you and have a good night. Thank Yeah. you, Dipin. Thank you, Dipin. Bye Yeah, bye. thank